Hello everyone, how are you? I hope everyone is fit and fine at their home. And today we are going to learn about the very first chapter from English Literature Flamingo book, which is your primary book. And let's see what it's titled and what message it carries for your 12th board examination or even after that. So, the title of the first chapter is The Last Lesson, which is written by the French author Alphonse Daudet. Alphonse Daudet ने ये chapter लिखा है The Last Lesson. And when we think about or when we hear the word The Last Lesson, what image comes to our mind? What do we think? What thoughts do we process when we think about The Last Lesson? क्या ये वो ऐसा लेसन है जो हमारे कोर्स के एंड में पढ़ाया जा रहा है एंड आफ्टर दैट द सिलेबस विल बी फिनिश्ड एंड वी विल बी हैविंग ऑल द एग्जामिनेशंस? Any other possibilities can be there. So while we are reading the chapter, we will explore it. First of all, I will like to say what this entire chapter is all about. It's about the importance of your mother tongue. जो आप आपकी मातृभाषा है, the first language of you, which you have learned since growing up, that language bears what importance, what significance in your life, how it is part and parcel of your daily life, that we will realize. This chapter is based on the times of war. जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर हुआ था तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिप्रकशंस, क्या रैमिफिकेशंस हुए थे और उस वजह से फ्रेंच पीपल पे क्या इम्पैक्ट आया, व्हाट वर द चेंजेस दे हैड टू फेस, व्हाट वर द एडवर्सिटीज दे हैड टू कन्फ्रंट बिकॉज दे लॉस्ट the battle against Germany. So all these were going on, and the author introduces a lead character, a student for us, and how he feels about the last lesson or the German language or the French language, and how he realizes that how important his mother tongue is, his first language is. First of all, let's take an introduction of the author, Mr. Alphonse Daudet, and how he has contributed to the literary world. The last lesson about the author. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. Obviously, he was belonging from the country of France and he used to write in French language. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War. The chapter is based on the events or incident that happened in the time of French War, Prussian War. Prussia, Russia हम जानते हैं, उसके आगे हमें P लगाना है and the pronunciation will become Prussia. Franco-Prussia War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. Obviously उस टाइम पे Germany नहीं था, we used to call it Prussia, और Prussia में भी 3 other countries were included. Germany was there, Poland was there, and some parts of Austria was there. If you remember, the famous dictator of Germany, that was Adolf Hitler. हिटलर को हम सब जानते हैं, हम कभी कभी अपने टीचर्स को भी वो उपमा देते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं, and sometimes we ourselves become Hitler in our life. We ourselves become very disciplined, very strict, very stringent, and with hard willpower, hard determination. But of course, we don't want to have the cruelty, the barbaric nature of Adolf Hitler. So उस टाइम पे प्रशिया में जर्मनी था, पोलैंड था and ऑस्ट्रिया था, and all three of these nations comprised of one single country called Prussia, and Prussia and France were fighting a war, and who won the war? France was defeated by Prussia. Obviously Prussia won the war. It was far more stronger that time. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine. See, you have to remember or memorize the spelling of these two states, Alsace and Lorraine. इसके एग्जाम में बार बार पूछते हैं. एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कि कौन से फ्रेंच स्टेट इस स्टोरी में मेंशन है, बट इफ़ यू आर राइटिंग सम काइंड ऑफ एलैबोरेट आंसर, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर, तो उसमें Alsace and Lorraine ज़रूर होना चाहिए. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Obviously, these two districts, French district जो है, उनको प्रशिया ने अक्वायर कर लिया है, कॉन्कर कर लिया है, possess कर लिया है, and read the story to find out what the effect this had on life at school. इन बच्चों की लाइफ में, स्कूल स्टूडेंट्स की लाइफ में इस एंटायर वॉर का क्या कॉन्सिक्वेंस था, क्या रैमिफिकेशन था, क्या रिजल्ट था, क्या प्रभाव था, इस बात को हम इस लास्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं. एंड आई गेस, आई विश दैट ऑल ऑफ यू गाइज आर बकल्ड अप,
with your 100% concentration, so we can march forward, we can proceed further. So I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. The story is narrated in a first person form, and the narrator of the story is a student whose name is Franz. See, there are two words we are going to repeat again and again. First is the country France, France. The second is the boy's name, the narrator's name, the protagonist, the main hero of the chapter's name. That is what? Franz, Franz. लास्ट में सी ई और जेड का फ़र्क है, डिस्टिंग्विश है, तो यू शुड बी एबल टू memorize that. So he is narrating the story. What is he saying? I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Dread, fear, terror, being afraid of someone, being scared of someone. So he started late for the school. He was delayed for the school. He did not reach school in his time, and he was already dreading the scolding. ड्रेडिंग द स्कोल्डिंग मतलब उसको अपने टीचर की डांट से, उनकी बेरेटमेंट से, उनकी स्कोल्डिंग से डर लग रहा था कि अगर मैं अब लेट पहुंचा तो हो सकता है मेरे टीचर मुझे डांट दें. Especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. M. Hamill is the teacher's name. He is a French teacher and he had already declared, आपके भी जैसे टेस्ट होने के 10 दिन पहले, 7 डेज पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि नेक्स्ट मंडे जो है वो आपका टेस्ट लिया जाएगा एंड यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो ऑब्वियसली एम हैमल इज़ द नेम ऑफ द फ्रेंच टीचर इन फ्रांसिस स्कूल. फ्रांस की स्कूल में एम हैमल जो था वो फ्रेंच टीचर था एंड एम हैमल ने उनको एक डिक्लेरेशन ऑलरेडी कर रखा था that tomorrow we will be taking a test on participles. Now I'm very sure that you are aware of the word participle, what goes on about it. आपकी जो लोअर क्लासेस में था उसमें participles and gerund दोनों आते हैं, तो I'm not going to explain it to you again and again. तो participle is a word which can be used as a verb as well as an adjective. Google it, do learn about it, whatever it is. आपकी मेमोरी को जॉग करना और आपको याद आ जाएगा. So, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. Franz ने obviously उसको prepare नहीं कर रखा था, तो he did not know anything about participles. For a moment, I thought running away and spending the day out of doors. Obviously, ये आपके मन में भी temptation आता है कभी कभी कि I have not learned about my test, I am not prepared for my exam. तो आप कहीं ना कहीं बहाना बना देते कि आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, I have a stomach ache or I have a headache or I'm feeling nauseated or I'm having a back pain or something like that. And your parents fall for it and they're like, oh my god, बच्चे को physical condition सही नहीं है, so they will not send that person, that student to home, to their school. So obviously the Franz boy, that boy realized that he made a plan that let's skip the school for today. आज मैं स्कूल बंक कर देता हूँ because I have not prepared for the lesson of participle, और वहाँ जाके मेरा क्विज लेंगे, मेरा ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट लेंगे अगर M. Hamill, तो I will be embarrassed, I will not know any kind of answer, and that is why the protagonist Franz is having a little idea, is having a little temptation to skip the school, to bunk the school and go somewhere else. It was so warm, so bright. Obviously the day was very good. It was warm and bright and very cheerful day it was. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. Woods यहाँ पे, woods means the forest. So there was some kind of forest at the outskirts and वहाँ पर birds जो है वो chirp कर रही थी, tweet कर रही थी, अपनी आवाज़, अपनी चोंच को बार बार ऐसे करके आवाज़ निकाल रही थी. And obviously morning time में when it's a new sun, the dawn is shining upon us and the birds are chirping and the small breeze is flowing. So it's a very tempting scenario. You just don't want to go to school and you just want to stay at home or just go to some garden or some park and bunk the school. And that's a natural student tendency. होता है कभी कभी students के साथ में. I understand. It was so bright, so warm. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. वहाँ पे एक sawmill था, mill था, हो सकता है कोई factory, कोई industry हो वहाँ पर, and वहाँ पर Prussian soldiers were drilling. They were practicing their march.
जो हमारे 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जो हमारे यहाँ पे परेड होती है, तो उसमें कैसे वो ड्रिल करते हैं, उनके हाथ पैर जो है वो सिंक्रोनाइज होकर मूवमेंट होता है। इन द सेम वे द प्रशियन सोल्जर्स कौन से सोल्जर्स, जो दूसरी कंट्री के हैं और जिन्होंने फ्रांस को एक्वायर कर लिया है, कॉन्कर कर लिया है, और अब वो अपनी मार्चिंग प्रैक्टिस, अपनी परेड की प्रैक्टिस उस मिल के बाहर, उस फैक्ट्री के बाहर कर रहे थे। दे वर ट्रेनिंग देमसेल्व्स, दे वर मार्चिंग देमसेल्व्स। It was all much more tempting than the rule of participles. Obviously, जो बाहर का सिनेरियो था, जो बाहर का एनवायरनमेंट था, जो बाहर का एटमॉस्फेयर था, वो मच टेम्पटिंग था, मच अट्रैक्टिव था कि हो सकता है कि आज मैं स्कूल को बंक करूं और मैं इन सोल्जर्स को जस्ट लेफ्ट राइट करते हुए देखूं, एंड दैट वुड बी वेरी मच tempting for me, that would be very much accepting for me than going to the school and reciting the rules of participle. You also understand कि बाहर का environment इतना enticing है, इतना attractive है कि बाहर birds हैं, बाहर soldiers march कर रहे हैं, बाहर warmth है, बाहर sun है, and it's a very good morning. But second side पे, second scenario में what एक तो एम हैमल है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, उनके फ्रेंच टीचर। सेकंड, उनका टेस्ट लेना बाकी है, कौन से सब्जेक्ट पे, पार्टिसिपल्स पे। एंड थर्ड, ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, ही डिड नॉट नो अ सिंगल लेटर अबाउट participles. Obviously, he was a poor student maybe, or he was a weak student. He was not much interested in studies. उसका ध्यान जो है वो दूसरी जगह पर, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है, उसका concentration 100% नहीं है, तो obviously he will not be able to recite, or he will not be able to take the test of participles. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. But फ्रांस ने बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बनाया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं स्कूल को आज बंक नहीं करूँगा, एंड आई विल डेफिनेटली गो टू माई स्कूल एंड टेक द टेस्ट ऑफ पार्टिसिपल। जो होगा वो देखा जाएगा। आपकी भी ये टेंडेंसी होती है कि ठीक है यार, टीचर्स तो हमारे फ्रेंडली नेचर के हैं, दे विल नॉट से मच, तो वी विल जस्ट गो, भले ज़ीरो आए हमारे मार्क्स, हमें पेरेंट्स को तो बताना होता नहीं है। एनीवे, सो फ्रांस वाज लाइक नो, आई विल रेजिस्ट, मैं उस अर्ज को, उस डिज़ायर को, उस विश को फाइट करूँगा। कौन सी डिज़ायर, कौन सी अर्ज, कौन सी विश, कि मैं स्कूल को बंक करके यहाँ पे रुक जाऊँ। तो फ्रांस ने बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाया कि नहीं, मुझे यहाँ बाहर नहीं रुकना है, मुझे मेरे स्कूल में जाना है, और इसलिए वो जल्दी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of bulletin board. What is a bulletin board? It's some kind of a notice board or a news board जहाँ पर सारे जो क्या बोल सकते हैं, न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, न्यू क्लेम्स हैं, ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें उस पर पेस्ट की जाती है, ताकि क्या हो, उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, उस टाइम पे मीडिया नहीं था, उस टाइम पे न्यूज़पेपर इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, तो ऑब्वियसली जितनी भी न्यूज़ होती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दिया जाता था, पेस्ट कर दिया जाता था, एंड ऑल द village people or city people or all the neighborhood wale people, they used to come there and read that news, and then अपने लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, अपने वर्ल्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में उनको पता चलता था। अगर एनीवन इज़ अ फैन ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो दे विल बी नोइंग दैट ऑब्वियसली वहाँ पे सोसाइटी में एक सुविचार के लिए एक बोर्ड है, तो जो हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े जो हमारे टीचर हैं, ही यूज्ड टू गो देयर एंड राइट थॉट ऑफ द डे for everyone to read. So in the similar fashion, bulletin board was there so that every person, every citizen can go there and read about the latest news, the updated news. So there was a large crowd of people, a large mob of people, throng of people were accumulated or were gathered over the bulletin board. ऑब्वियसली हो सकता है बुलेटिन बोर्ड पे कोई नई एक्साइटिंग न्यूज़ आई हो, इस वजह से वहाँ पे सारे लोग गैदर्ड थे, together they were collected, they were assembled, and what? For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Obviously उस टाइम पे फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहे थे, war was going on, तो whatever new instructions were there, whatever authorities, the authorities were releasing the claims, और जो भी information वो release कर रहे थे, या war की information कि आज कितने लोग मर गए हैं, आज कितने लोग घायल हो गए हैं, and what is the state of border right now, what is the state of enemy right now, तो all that
latest update, latest news about the war, the draft, the issues made by the commissioner obviously जो war commissioners हैं, जो commanding officers हैं, उनकी तरफ से क्या latest information आ रही है, all these things were updated on that bulletin board. और क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, बहुत सारा मॉब था, क्राउड था, तो फ्रांस ने सोचा कि हो सकता है अभी कोई नई खबर आई हो, नई इन्फॉर्मेशन आई हो, नया ऑर्डर आया हो, एंड ही wanted to go there and see that information, but उसके पास टाइम नहीं था. he had to go to his school because उसके टीचर जो हैं वो टेस्ट लेने वाले थे. What can be the matter now? He wondered, he imagined, he thought कि क्या मैटर हो सकता है, क्यों लोग वहाँ इकट्ठे हैं, क्या नई खबर वहाँ पर आई है. Then as I hurried by fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. फटाफट फ्रेंड जा रहा था, उसका he was getting late for his lesson for his school, so that is why he was hurrying up, he was in a haste, he was moving fast. The blacksmith, वहाँ का जो blacksmith है, blacksmith किसको बोलते हैं, जो लुहार होता है. The blacksmith watcher who was there, watcher maybe the normal watchman can be said, who was there with his apprentice. Apprentice मतलब जो helper होता है, जो assistant होता है, जो आपकी help करने के लिए, आपका जो right hand जिसको बोल सकते हैं, that apprentice was there reading the bulletin called after me. उसने blacksmith ने फ्रांस को बुलाया, जोर से आवाज़ दी. उसने उस ब्लैकस्मिथ ने वो नोटिफिकेशन पढ़ा वहाँ पर और फ्रेंड्स को आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. हम बोलते हैं डूड और गाय और मैन, यू नो, लाइक चिल डूड, चिल गाय. तो उसी तरह से उस पर्सन ने बोला, डोंट गो फास्ट बब, यू डोंट हैव टू हरी सो मच, यू डोंट हैव टू हेस्ट सो मच. तुम स्लो मोशन में जाओ, तुम आराम से जाओ. यू डोंट हैव टू हरी योर सेल्फ अप, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर स्कूल. I thought he was making fun of me. फ्रांस ने सोचा कि ऐसा क्यों बोलेगा, लाइक ऑब्वियसली आई एम गेटिंग लेट फॉर माई स्कूल, और इसको तो और इनक्रेज करना चाहिए कि तुम भागो, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होने वाला है या तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो चुका है एंड यू आर ऑलरेडी लेट अबाउट इट. बट यहाँ पे तो ये पर्सन उल्टी बात कर रहा है, ऑपोजिट बात कर रहा है. क्या बोल रहा है कि तुम आराम से स्कूल जाओ, तुम्हारे पास काफ़ी समय है स्कूल जाने के लिए. तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. फ्रांस ने सोचा कि हो सकता है ये ब्लैकस्मिथ जो है वो पागल हो गया है और वो मेरा मजाक बना रहा है. ही इज़ लाफिंग एट मी, ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी. एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. सी, हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जो एम हैमल है वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल के डायरेक्टर हैं, स्कूल के ओनर हैं, स्कूल के टीचर हैं. तो उन्होंने अपने छोटे से घर में ही एक स्कूल खोल दिया है. तो फ्रांस जल्दी से गया, ही वेंट देयर फास्टली एंड एम हैमल हैड अ गार्डन आउटसाइड देयर एंड फ्रांस रीच दैट गार्डन. वो वहाँ उस गार्डन में पहुँच गया आउट ऑफ ब्रेथ. आउट ऑफ ब्रेथ मतलब वो हाफता हुआ, वेंटिलेट करता हुआ वहाँ पहुँच गया. वो हाफ क्यों रहा था, वो लॉन्ग ब्रेथ्स क्यों ले रहा था, बिकॉज ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल. ही डिडंट वांट टू get late in the school. Usually when school began, there was a great bustle, hustle, chaos, pandemonium, noise, vociferation, a great bustle which would be heard out in the street. Now usually, obviously, we know that students जो हैं वो tend to make some kind of noises, screaming, yelling or any kind of noise that they want, but today it was different. Usually when school began there was a great bustle, the great chaos. हमेशा जो है एक बहुत बड़ी शोर होता है वहाँ पर, but which could be heard out in the street. Even गली के बाहर आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं. The opening and closing of desk, obviously the opening and closing of desk, बार डेस्क को ऊपर नीचे करेंगे तो उसकी आवाज़ आती है. Lessons repeated in unison means obviously there was drilling going on. बच्चे अपने टीचर्स के पीछे उस चीज़ को रिपीट कर रहे थे so that they can cram it, so they can memorize it, so they can remember it at the time of exam. तो drilling was going on. Usually आज की बात नहीं कर रहे हैं. फ्रांस की स्कूल में usually there's a great noise going on. डेस्क का ऊपर नीचे करना, लेसन्स का पढ़ना, उनकी ड्रिलिंग करना, एंड very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Obviously हम हमारे जो हाथों को है वो हमारी ears पे लगा देते थे और उस चीज़ को रिपीट करते थे ताकि दूसरों की आवाज़ हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे और
हमारे टीचर्स जो है वो हमेशा एक स्केल लेके, एक रूलर लेके चलते थे, और जब जब कोई गलती करता था तो या तो उसको मारते थे या फिर वो बेंच पर पटकते रहते थे, जोर जोर से थंप करते रहते थे। और इन सब की आवाज़ मिलाकर हमारी स्कूल को बहुत ज़्यादा नॉइजी बना देता था, बहुत ज़्यादा केओटिक बना देता था। बट now it was also still. Everything was so silent, so peaceful, so stable, so stagnant. Everything felt like motionless. कोई motion, कोई movement वहाँ पर नहीं हो रहा है. I had counted on the commotion. Commotion, again, the same thing, chaos, the noise, the pandemonium that is going on. But now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. फ्रांस ने क्या सोचा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा होगा, और हो सकता है मैं चुपके से जाके स्कूल क्लासरूम के पीछे बैठ जाऊँ और मुझे कोई भी नोटिस नहीं करेगा, कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं. He was counting on the commotion. When you count on someone, मतलब आप उस पर rely करते हैं, आप उस पर depend करते हैं, you rely or depend on that particular thing, कि ठीक है, I'm relying on the commotion, I'm relying on the noise, कि ultimately वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा होगा और मैं चुपके से अंदर क्लास में चला जाऊँगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा. To get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. But उस दिन ऐसा scene नहीं था. Circumstances, situations were quite different. They were not, there was no drilling, there was no rapping of the ruler, there was no any other kind of sound. उस टाइम पे बहुत peaceful था. किस टाइम पे? जिस दिन ये story narrate कर रहा है, उस दिन स्टेबिलिटी थी, पीस थी एंड कामनेस थी उस पूरे स्कूल में. ऐसी कामनेस जो सिर्फ संडे के दिन मिलती है. ऑब्वियसली संडे के दिन स्कूल्स क्लोज रहते हैं, तो वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती है, स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, टीचर्स आर नॉट देयर. तो इन द सेम वे दैट डे इट वाज सो स्टिल, द स्कूल वाज सो पीसफुल कि फ्रेंड्स को लगा कि आज संडे तो नहीं है. Through the window I saw my classmates already in their places. उस विंडो से उसने देखा कि उसके क्लासमेट्स, उसके फेलो मेट्स सारे ऑलरेडी वहाँ पर आ चुके हैं, प्रेजेंट हो चुके हैं. And M. Hamill walking up and down with this terrible iron ruler under his arm. M. Hamill जो थे वो उस क्लासरूम में खड़े थे, वो अपना लेक्चर ले रहे थे, and he had an iron ruler, iron scale उनके पास में था, और वो अपने शोल्डर पे कैरी करके यहाँ पर रख के अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो चल रहे थे पूरी क्लास में, जैसे आपके टीचर्स चलते हैं. यू कैन इमेजिन, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. Obviously, lecture had been already started. M. Hamill was present. There was no noise, no chaos in his school. तो जब उसने गेट खोला और अंदर गया, तो the entire class got disturbed, distracted, और सब ने उसकी तरफ देखा. किसकी तरफ देखा? फ्रांस की तरफ देखा. And how I blushed and how frightened I was, you can imagine. कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा, अंदेशा लग गया होगा कि मैं कितना ह्यूमिलिएटेड था, कितना मॉर्टिफाइड था, कितना अशेम्ड था, कितना एम्बेरस्ड था. कि वो जो मोमेंट था मेरे लिए, इट वॉज अ वेरी इंसल्टिंग मोमेंट, बिकॉज सब मुझे देख रहे थे, एंड आई वॉज अ कल्प्रिट, आई वॉज अ डिफॉल्टर, आई वॉज अ लेट कमर टू माई स्कूल, टू माई क्लास. But nothing happened. Obviously, this is a surprising twist in the story कि कुछ भी नहीं हुआ. Nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." और उसने M. Hamill ने बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटनेस से, बहुत सिंसियरिटी के साथ में M. Hamill को बोला कि you don't have to worry, go to your place quickly. Little Franz, we are beginning without you. Little Franz, obviously उनके मन में प्यार उमड़ रहा था, affection उमड़ रहा था. So M. Hamill addressed to Franz as Little Franz, we were beginning without you. कि तुम एकदम करेक्ट टाइम पे आ गए हो, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, but now that you have come, you can just go back to your seat and join us in the class. M. Hamill is usually a very strict, very disciplinarian, very stringent person. उनको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है, बट टुडे he was really polite towards Franz. He did not scold or did not berate or chide Franz, and
उसके ऑपोजिट उसको प्यार से एड्रेस किया, एकदम लविंगली केयरिंगली एड्रेस किया और बोला कि तुम अपनी पीछे वाली सीट को ले लो, अपनी सीट पे चले जाओ, हम हमारे लेसन को स्टार्ट करते हैं. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. वो गया, he went to his desk and he sat there and थोड़ा टाइम उसको लगा नॉर्मल होने में. Obviously he was not expecting the reaction of M. Hamill to be so polite, to be so sweet, to be so docile or to be so calm. यूजुअली उनको बहुत गुस्सा आता है, हो सकता है अपने आयरन रूलर का इस्तेमाल, उसका यूजेज भी करे एंड हो सकता है वो उसको क्लास के बाहर भी निकाल दें. सो अल्टीमेटली फ्रांस हैड टू प्रोसेस दैट थिंग. उसके माइंड में उस चीज़ को प्रोसेस करना पड़ा थोड़े टाइम के लिए, अपनी डर को प्रोसेस करना पड़ा कि वो इतनी देर से जो उसके हार्ट में जो धक धक चल रहा था, द थम्पिंग ऑफ हार्ट दैट वाज गोइंग ऑन इन हिज चेस्ट, he got normal. उसकी pulses normal हो गई. He calmed himself out. His fright, his terror, his horror vanished a little bit, disappeared a little bit. And उसने क्या notice किया? Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. फिर उसने नोटिस किया, जब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया, when he got a little normal, he noticed that his teacher was wearing a different kind of attire, different kind of outfit. आज उन्होंने जो ड्रेसअप किया है वो उनके नॉर्मल डेज से डिफरेंट है. What he was wearing? He was wearing a beautiful green coat. ग्रीन कोट था, उसके अंदर क्या था? His frilled shirt. उन्होंने अंदर frilled shirt पहना था. यूजुअली फ्रांस में it's some kind of a fashion statement in 1800s कि जो क्रश वाले जो शर्ट्स होते हैं जहाँ कॉलर में क्रश आता है, उस शर्ट को वो लोग पहनते थे. उसके ऊपर एम हैमिल ने ग्रीन कोट पहन रखा था एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने अपने सिर पर, he was wearing a really good little black silk hat. When you go through your book, you will be able to know, you will be able to imagine what kind of person M. Hamill was, how he was looking that particular day. That he never wore except on inspection and prize days. Now you also guys be knowing that whenever there's an Independence Day or whenever there's a Teachers Day or Farewell Day or any other surprising, any other occasion or any other festivities in your school, then teachers also used to dress up. Obviously we people are also human beings, we also like to dress up nicely, gently in front of other people. So M. Hamill also wore that kind of attire, that kind of special attire whenever there was inspection going on and what else? Prize was being distributed. जब कोई स्पेशल फेस्टिविटी होती है, ओकेजन होता है, इवेंट होता है, तभी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं. In the similar manner, in a similar fashion, M. Hamill was wearing grand clothes or special clothes or unique clothes. He was wearing a green coat, he was wearing a frilled shirt and he was having a little black hat on his head. So all these special outfit must have some kind of reason in them. कुछ सोच समझ के ही उन्होंने पहना होगा. Usually वो festivities के दिन, occasion के दिन ही पहनते हैं, but today it was different. Today he was wearing it even though there was no festival, there was no occasion. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. उसके अलावा the fourth change, the fourth distinguished feature of his school he is noticing is the school was so strange and so solemn. Solemn means serious, serious. Yeah. So the school was seeming very serious to him. Obviously उसको लगा कि आज कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है. It's something awkward is there, something weird is there, something bizarre is going on, something absurd is going on, and he did not know what it was. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Now the fifth major change that Franz noticed about his classroom was back bench mein, at the back of his class, there were
villagers sitting. Obviously it is very awkward for us to imagine even कि आपकी क्लास के पीछे villagers बैठे हैं या आपके पेरेंट्स बैठे हैं और वो भी लेसन ले रहे हैं, वो भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एम हैमिल उनको भी पढ़ा रहे हैं. तो इट्स अ लिटिल awkward kind of situation, it's an awkward kind of circumstance. तो what he saw, I was surprised. Franz was surprised. He was startled. He was amazed. He was shocked by the presence of the village people at the back bench of his class. Usually back benches जो है वो empty होती हैं, but today it was not empty. It was occupied by many village people who were sitting at the back benches, sitting quietly like ourselves. Old Hauser का मेंशन जो है वो बार बार बाद में आएगा. हॉजर मीन्स मे बी फेमस विलेज पर्सन और वहाँ का कोई गांव का बहुत बड़ा सरपंच हो सकता है. दैट पर्सन वॉज देयर विद दिस 3 कॉर्नर्ड हैट. उसकी हैट जो है वो 3 कॉर्नर्ड थी. डजंट मैटर. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहला एक्स पोस्ट मास्टर रह चुका है, ही माइट हैव बीन रिटायर्ड राइट नाउ. तो द फॉर्मर पोस्ट मास्टर वॉज देयर, द ओल्ड हॉजर वॉज देयर, एंड हु एल्स, एंड सेवरल अदर. The former mayor was also there, जो उनके village का mayor था, वो भी वहाँ present था. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees. Old Hauser के पास में क्या था? What he had brought with him? Old primer. Primer क्या होता है? आपके लिए जैसे जो आ ई ई ये सारी जो क ख ग है, इन सब की जो बुक्स होती हैं या जो ABCD अल्फ़ाबेट्स की जो बुक्स होती हैं, दैट इज़ नोन एज प्राइमर. प्राइमर मीन्स जहाँ प्राइमरी बेसिक नॉलेज दिया जाता है, दैट इज़ प्राइमर. सो ओल्ड हॉजर वॉज हैविंग अ प्राइमर इन हिज लैप, on his knees, and thumbed at the edges. That primer was thumbed at the edges because obviously it was used again and again. वहाँ पे जो इस तरह का जो फोल्ड हो जाता है, दैट इज़ thumbing at the edges. थोड़ा slightly damaged था. हो सकता है कि बार बार पढ़ने से या बार बार पेजेस को टर्न करने की वजह से that primer got damaged. So that primer was with old Hauser, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. Obviously old Hauser had spectacles, और वो spectacles उस book पर पड़े थे. That those spectacles were lying on the pages of the book. कौन सी book? The primer book. Primer means the basic knowledge के लिए, जो basic alphabets के लिए जो book use की जाती है, that is primer. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me said, इन सब के बारे में, ये सारे जो changes हो रहे हैं, उनको actually M. Hamill absorb कर रहा था, process कर रहा था. कौन कौन से changes हैं? Let's take a quick review. First of all, the school was really silent. Second of all, this M. Hamill was very polite to him. Third, M. Hamill was wearing different kind of special attire on that day. Fourth, the school's environment was seeming a little strange, little bizarre, little absurd. And fifth, backbenchers were sitting, village people were sitting at the back of their classroom. So all these things were some kind of surprise or some kind of shock to Franz, and that is why he took some time to process all those things. जब वो process कर चुका था, जब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें अंदर चली गई थी, then what happened? While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair. He sat on his chair. M. Hamill, जो उनके French teacher थे, in the same grave and gentle tone. Grave means solemn, serious. उनकी tone जो थी, उनका जो posture जो था, उनकी जो बैठने का तरीका, उनका जो एटीट्यूड जो था, उनका जो बिहेवियर था, वो काफ़ी सीरियस था, काफ़ी ग्रेव था, काफ़ी सॉलम था. एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, बट उनकी जो टोन थी, उनकी जो बोलने की जो आवाज़ थी, वो काफ़ी पोलाइट थी, काफ़ी जेंटल थी, काफ़ी काम थी. उनके बैठने का स्ट्रक्चर, उनकी वे ऑफ कंडक्ट, उनका जो एटीट्यूड था, वो थोड़ा सीरियस था, बट उनकी जो पोलाइटनेस थी, वो टोन, उनकी टोन में शो हो रही थी. And what he said, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and the new masters comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. Obviously, it's a very sad thing, a very disappointed thing. आप उस चीज़ को underline कर सकते हैं. It's the crux of the story. What happened कि बर्लिन, जो currently जर्मनी की जो capital है, वहाँ से order आया है कि Prussia has acquired France.
प्रशिया ने फ्रांस के ऊपर कैप्चर कर लिया है, कॉन्कर कर लिया है, कब्जा कर लिया है, कॉन्फिस्केट कर लिया है फ्रांस को। और एल्सेस एंड लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है एल्सेस एंड लॉरेन। उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक नया ऑर्डर आया है, नया इंस्ट्रक्शन आया है। कहाँ से? बर्लिन से। बर्लिन इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ जर्मनी। वहाँ से एक ऑर्डर आया है कि आज से फ्रेंच क्लासेस बंद कर दी जाएंगी और कल से उनकी लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में जर्मन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी quick thing, very sudden thing, very abrupt thing, very amazed thing, surprising thing कि ऐसे कैसे आप किसी की मदर टंग को acquire कर लेते हो, या फिर you are just banning the use of mother tongue to some people, to the students of a school, or you are introducing a completely new foreign language in their lives. तो बर्लिन से ऑर्डर आया that Prussia has won the war against France, and now in the districts of Alsace and Lorraine, ये एल्सिस एंड लॉरेन कहाँ सिचुएटेड है? फ्रांस में। तो फ्रांस के एल्सिस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे है। कल से उनको सिर्फ जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। तो यू कैन इमेजिन what kind of adverse effect or unfavorable or different negative effect will be in their lives of the school students, the French students. अभी तक वो इतने टाइम से, इतने सालों से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते हुए आ रहे हैं, and all of a sudden they are being told that tomorrow onwards you will be taught the German language and French language would be banned from your school. तो it's not a good news, obviously. It's not a amazing khush khabar kind of thing. It's a very bad news, and that is why M. Hamel was really disappointed in himself, in his country, in the current situation of his country, and इसलिए वो काफ़ी upset थे और उन्होंने फ्रांस को भी काफ़ी politeness के साथ में बात की, and he told them that today is going to be their last lesson, the last French lesson, and he want utmost concentration, 100% attention of all the students. I want your 100% attention in my lecture, in my video, so that you might acquire 100% marks. I hope you guys understood today's lecture. We will take a quick review of it. The story begins from Franz walking in the street, and he is very afraid that he does not know about the rules of participles, and he was fearing that M. Hamel, his French teacher, might scold him. He was walking on the streets, and suddenly he saw that some crowd or some mob or some people were assembled at the place of the bulletin board. The bulletin board is of utmost importance because all the information from war, all the drafts or the orders from the authorities used to come from other places and got pasted on that bulletin board. So he avoided that bulletin board, and he went to his school. The school's atmosphere, the school's environment was really weird that day, really special or unique that day. There was a strange calmness, strange peace there. The French teacher M. Hamel, who usually was very much strict, was today very polite, very friendly, very cordial, very amiable, and he was wearing a different attire. में तीन चीज़ें क्या थी? First of all, the green coat. Second, the frilled shirt, and third, the little black hat. Fourth, the school was really strange that day. Fifth, the village people, Old Hauser, the former mayor was there, former postmaster were there, and other prominent village people were sitting at the back bench of the classroom. Then M. Hamel made a declaration कि Berlin से, the capital of Germany से order आया है, and what order was it? That from tomorrow onwards French will be banned, French will be abandoned from all of us, and German language will be introduced. So I hope you guys go through all the notes, all the question answers that I'm going to give you, all the and if you have any kind of doubt about it, or if you're not understanding anything, you can just ping me whenever. Until then, goodbye.